storytelling, we will journey through tales in different languages, stories that narrate history, reflect the present, and weave dreams for the future. This platform is dedicated to all the storytellers and writers whose words give birth to new ideas and inspire ourselves in the world of stories, because these are not just the tales but reflection of our identity, our culture, and our essence. So I would like to call our chairperson of this session, Miss Jancy James. मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार जोरदार तालियों से मैम हमारे बीच उपस्थित हैं, इनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे. It's really been honor to have you on stage. Let's welcome and introduce to our other story readers. We have मणि कुंतला भट्टाचार्य. आपका स्वागत है. जोरदार तालियों से सभी प्रतिभागियों का स्वागत करेंगे. नेक्स्ट वी हैव राजेश्वर सिंह राजू जी. अगले साथी नंदिनी सेन जी. नेक्स्ट वी हैव जोफा गोंसावलिस. And last but not least, we have C. Ganesh ji with us. Our chairperson of this session is Jancy James, a former Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University and founder Vice Chancellor of Central University of Kerala. Professor Jancy James is an author and critic in English and Malayalam. She is former General Council member of Sahitya Akademi. She is recipient of Commonwealth Post-Doctoral Fellowship, Indo-Canadian Shastri Foundation Faculty Research Fellowship, and several awards, including Anne V. Pillai Award, and she is member English Advisory Board of Sahitya Akademi. Ma'am, we are request you to please come on stage for few words and as an opening ceremony of this wonderful session. Thank you so much. The writers on stage, Manikundala Bhattacharya, Rajeshwar Singh Raj, Nandini Sen, Jofa Gonsalves. I hope C. Ganesh and distinguished listeners. This is I must say, a very great scene where the society, life experiences get reflected through the creativity of these brilliant young people. Some of them I know personally. I have read their works. I wish them all luck. We have all come here to listen to them. So I will set apart my comments, if any, to my concluding remarks. I wish them all the best. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to call our first reader, the dynamic personality, Miss Mani Kuntala Bhattacharya. A noted Assamese writer, has 49 books, including 24 novels to her credit. Some of her books have been translated into other languages. She is also a script writer for a feature film and TV serials based on her stories.
She has bagged a total of 30 awards from Assam Sahitya Sabha and other organizations. She has also worked on RAM as a showstopper of fashion shows and has been on the jury of many film festivals. So, आपका स्वागत है मणिकुंतला भट्टाचार्य जी. नमस्कार, सभी को नारी दिवस की बधाई है। मैं आसाम से आई हूँ, हिंदी में अपनी गल्प पढ़ूंगी। तो इस गल्प की जो किरदार है, एक माँ के ऊपर है, माँ के अनुभव, जिसका नाम है राजपुत्र। अनुवाद क्या है किशोर कुमार जैन। जैकेट की जेब में हाथ डालकर उसने रास्ता पार किया। गेट पर माँ इंतजार कर रही थी। पिछली रात बिना सोए, बिना एक घूंट पानी पिए चिंतित एक औरत जिस तरह की दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा थकी हुई दिखाई दे रही थी। वो आंखें नीचे किए वो गेट की तरफ बढ़ा। वह घर की तरफ आगे बढ़ा। कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, आंखें ऊपर नहीं उठ रही थी। 2 हाथ की दूरी पर माँ रुकी हुई थी। स्कूल की परीक्षा में कोरी बही जमा देकर आया था ऐसे ही। कभी भी किसी कक्षा में दूसरा स्थान ना पाने वाला लड़का था वो। उसकी माँ की उस पर गहरी आस्था थी। उसने उत्तर पुस्तिका कोरी छोड़ दी थी। लिखने के समय सारे जवाब याद रहने के बावजूद गड़बड़ा गया था। अर्थहीन जैसा लग रहा था। वह पहली बार सरस की सिगरेट पीकर घर लौटा है। वो ससुर के घर से अपमानित होकर घर लौटा है। 2 घंटे की वह पिताजी की समाधि के पास रुककर बरसात में भीगते भीगते लौटा है। वह माँ की खून की जांच का कागज जेब में लिए लौटा है। चिकित्सक ने एक ही बात कही थी, जितने दिन है घर ही रहे, लास्ट डेज। आ गए? माँ ने पूछा। उसने सिर उठाया। गेट माँ ने ही खोला था। बरामदे में रुकी हुई नौकरानी हवा की तरह उड़ते हुए घर के भीतर चली गई। वह बरामदे में ही बैठ गया। जूते मोजे खोले, कमीज खोली, बनियान खोली। माँ रुकी हुई थी। आंखें लड़के के शरीर पर घूमने लगी। सारी रात पुलिस ने ऐसे थोड़े ही बैठा रखा होगा। जरूर मारपीट की होगी, जलती सिगरेट से दागा होगा। माँ ने अधीर होकर पूछा, उन लोगों ने क्या क्या नहीं किया होगा? किसी ने कुछ नहीं किया। 2-3 सवाल पूछकर बिठा दिया। लॉकअप में? हाँ। उसने सिर हिलाया। उसने घड़ी खोल दी। अब अपनी कमर से पेटी खोल रहा था। यहाँ क्यों खोल रहे हो? बाथरूम में जाओ। ये सब ज्यादा गंदे हो गए हैं माँ। फिर भी मान लो शमशान से आया हूँ। माँ सिहर उठी। 2 दिन बाद ऐसे ही आएगा बेटा शमशान से। लेकिन किसे आकर कहेगा, अंगारे लेकर आओ, हाथ पांव सेक लो। कौन लाकर देगा आंगन में उसे नहाने का पानी? उसकी आंखें सरोवर की तरह भर आई थी। छाती तो ऐसे थी मानो पंछी ने घोंसला खाली कर दिया हो। वो भीतर चली गई। काम की महिला को निर्देश दिया कि बेटा बाहर बरामदा में ही नहाएगा, इसलिए कपड़ा संभाल कर दे देना। माँ बिस्तर पर लेट गई। ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। ग्रीवा में कैंसर है, गले में चेट है, उसमें एक पाइप लगाई हुई है। उसकी बातचीत बेटा समझता है। काम करने वाली औरत आधा समझती है, आधा नहीं। बिस्तर पर दोनों पाँव लटके होने की हालत में ही माँ पर बेहोशी छा गई।
छाती पर खाली पिंजरा है। बेटा एक दिन एक पंछी को हाथ पकड़ के ले आया था। दोनों एक साथ रुड़की के IIT में पढ़ रहे थे। 1 महीने पहले ही पिताजी का मौत हो गई थी। माँ की आंखों में एक नया सपना पलने लगा था। वह नागपुर की लड़की थी। उन लोगों की इच्छानुसार ही माँ ने दोनों की शादी कर दी। बेटा खुश रहे। छाती अंदर से पंछी के कलरव से मुखरित होने लगी। दोनों की नौकरी दिल्ली में ही थी। लेकिन बेटा सब कुछ छोड़कर चला आया था। उसने अकेलेपन में माँ की याद आने लगी। माँ भी सोचती थी, सभी सोचते थे, लेकिन वह बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। क्यों कहूँ या ना कहूँ, इस भाव से उसने मुंह से निकलता था, अच्छा नहीं लगता माँ, जब जब दिल्ली में नहीं कर सकता। माँ पंख फैलाकर बेटे को समेट लेती है। सारे तिरस्कार से उसे बचाना चाहती है। हाथ के कान के सारे गहने रुमाल में बांधकर उसके हाथ में देकर बोलती है, बैंक से लोन ले लो, व्यापार करो। वह माँ की चेहरे की तरफ टकटकी लगाए देखता है। धुंधलाता जा रहा है माँ की शरीर। साथ के 2 लोग अभी भी इस शहर में हैं। भांग की अड्डा अभी भी चल रहा है। वह वहाँ शामिल हो गया था। पंछी उड़ता हुआ आता है, उड़ते हुए चला जाता है, छोड़कर चला जाता है कागज का एक टुकड़ा। थरथराते हाथों से वह उसे उठाती है, समझती है सब समझती है। वो तो उसकी माँ नहीं है जो सब कुछ सहन कर लेगी। हाथ में हुक्का लिए बेटा दरवाजा के पास रुकना चाहता है। घर में हुक्के का चलन नहीं था। उसका पिता स्टेट बैंक का कर्मचारी था। नरम स्वभाव का आदमी था वो। बेटे के ऊपर जितना शासन करना होता था, उतना उसकी माँ कर लेती थी। खुरदरी आवाज से बोलते ही शांत हो जाने वाला बेटा था उसका। बहुत मेधावी लड़का था वो। उसके हाथ में अनवरत एक किताब रहती थी। वह बेटा डिप्रेशन का शिकार हो गया। महिला की बेहोशी टूट फूट कर चूरमार हो गई। जीवन मानो कांच का एक एक्वेरियम है। पक्के आंगन गिर जाता है और चकनाचूर हो जाता है। सुनहली रूपहली मछलियाँ फड़फड़ाते हुए छटपटाती है। वो फड़फड़ाती है, उठकर बैठ जाती है। नहीं नहीं, प्रबल इच्छाएं अकर्मण्य हो गई है। कितना भी क्यों न कहे, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति की बातें संतान के सामने सभी अर्थहीन हो जाती है। संतान के सामने पराक्रम के सारे हथियार समर्पित हो जाते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे ही सुनाई दे रहा है उसे, बेटा शरीर पर पानी डाल रहा है। कानूनी प्रक्रिया से विवाह विच्छेद होने के पहले वो पत्नी के पास गया था। शायद उसके पैर भी पकड़े होंगे। इसी तरह एक दिन सुबह रेल से लौटकर बाहर बरामदा में ही नहाया था, गंदा होने की बात कहकर। बाद में चाय रोटी चबाते हुए कहा था, उसने पढ़ाई जरूर की है माँ, लेकिन बहुत सी बातें उसने सीखी नहीं। क्यों, क्या हुआ? लात मार दी है मुझे। आदमी आदमी को कैसे मार सकता है वाला? मुंह से कहना ही काफी नहीं होता है क्या? माँ की छाती पर उस लात लग गई। अपने आप को संभाल नहीं पाई और चित्कार कर उठी। परिवार को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। बेद ओझा झाड़ फूक ताबीज मादल पूजा पाठ सब की थी। पल मात्र में उन्हें दूर कर वह बोल पड़ी थी, छोड़ दे उसे। क्या? सभी माँ राजपुत्र की तरह अपने बेटे को पालती है, चाहती है कि उसका बेटा राजा की तरह पराक्रमी बने, चाहती है कि चक्रवर्ती की तरह राजा का सभी आदर सत्कार करे। लेकिन अदालत से लौटने के बाद उसने उससे कहा था, वो जैसे भी थी क्यों न थी माँ, फ्री कर दिया उसे, अब आगे बढ़े, अपना सपना पूरा करे। माँ चुप रह गया, सोचता रहा, और मेरा सपना, तेरा सपना? माँ से बेटे का चेहरा देखा नहीं जा रहा था।
पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना भी उसका सपना नहीं था। अच्छी तरह समझ सकती है वो, लेकिन क्या हो सकता था उसका सपना? नशा, दोस्तों के साथ अड्डाबाजी, ये तो सपने नहीं है। सपने से दूर भागने का रास्ता है। क्या है तुम्हारा सपना बेटा? नहीं नहीं, उसे नहीं पूछा जा सकता। तलाक के बाद वो सदमे में है, नियमित दवा ले रहा है, योगासन सीख रहा है। स्वस्थ हो जाएगा वो, स्वस्थ आदमी बनकर, ईमानदार आदमी बनकर रहेगा वो इस समाज में। फिर से काम में लग जाएगा वो, फिर से लौट आएगी उसकी आंखों में जीवन जोशना। फिर से किसी एक दिन पुनः वो थाम लेगा किसी एक नई नारी का हाथ। बेटा उठकर आता है। माँ, एक बात सोच रहा हूँ, जमीन बेकार पड़ी है देखो। उस तरफ तो देखना भी मत, बिल्कुल मत देखना, वो दूसरे की जमीन है। लेकिन पहले तो हम लोगों की ही थी, लेकिन अब हम लोगों का नहीं है। समझते क्यों नहीं? वो तो मैं समझ गया, लेकिन जमीन बेचे कितने साल हो गए बताओ? पूरे 5 साल। मेरी शादी में ही बेची थी तुमने, तभी उसने दीवार बनाई थी, आज तक कोई खबर नहीं। दत्त मर गया और कौन आएगा? श्रीमती दत्त दिल्ली में नौकरी करती है, बेटा बेटी भी नहीं है, क्या करेगी वह जमीन देखकर? इसलिए तो सोचता हूँ कि मैं ही देखभाल कर लूँ, जंगल सफाई करने के लिए कार लेबर लगाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल मत करना। कुछ नहीं करूँगा माँ, बाँस का बेड़ा लगाकर 2 कमरे किराए पर दूंगा। अपना खर्चा ही कितना है, तो काम क्यों नहीं करते? वो चला गया। माँ बिस्तर पर लेटी रही, खुली हुई खिड़की से बाहर की तरफ देखती रही। उसकी आंखों की पलके पर ओस की बूंदों की तरह मानो आंसू फिर भी टपकते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कितना विनम्र मेधावी लड़का था, लेकिन आज अकर्मण्य होकर जीवन गुजार रहा है। हल्का सा कोलाहल। हाँ, जमीन का जंगल साफ करवा रहे हैं, बांस का बेड़ा मंगवा लिया है, मजदूरों की आवाज सुनाई दे रही है। माँ बाहर की तरफ चला गया। वो स्वर्गीय दत्त द्वारा खरीदी गई उनकी ही जमीन पर घर बन रहा है। गुस्से में माँ बेटे को भला बुरा कहा, जहां से जो लाए हो वापस कर दो, तोड़ दो इन घरों को। दूसरे की जमीन पर ये क्या कान करना चाहते हो? डोंट वरी माँ। उसके जीवन में 1 साल भी नहीं रहा पंछी। उससे पहले कभी कभार घर के कमरे में बीच बीच में सीटी बज जाती थी, ठीक धूप की धुआं की तरह अच्छी लगती थी, पवित्रता से भरपूर, खुश भरा। वो सीटी फिर से सुनाई दी। माँ बिस्तर पर बैठ गई। बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, सीटी बजा रहा है। उसे शांति मिली है क्या? खुश है क्या? खिड़की से बाहर नजर पड़ते ही दिखाई देता है अन्याय से बनाया हुआ घर। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गए, साल भी खत्म होने को है। माँ खुद जानती है किसी भी पल ये दुनिया छोड़कर जाना होगा। बेटे ने ट्यूटोरियल होम खोल लिया है, उसका जीवन कुछ तो आगे बढ़ेगा। उसके चेहरे की तरफ देखती रही माँ। बेटे को बुद्ध बनने के लिए वनगमन करते समय राजमाता को जो कष्ट हुआ था, उसे वह महसूस करती है। आंखों के आंसू कोई बाधा नहीं मानते। कैसा है ये संसार, कैसा है ये मानव जीवन, क्या है ये जरा रोग मरण? कौन देगा इसका जवाब? यहाँ तो कोई नहीं है। रीता पड़ा है छाती के बीच का ये पिंजरा। बेटे को कहना चाहती है, जिसे चाहता है उसे ले आ, एक साथ रहना हमेशा मेरा आशीर्वाद है। अचानक हलचल, पहले जैसी नहीं, लेकिन पहले सी जगह में ही हुई है। दिल्ली से श्रीमती दत्त आई है, साथ में पुलिस, हाथ में जमीन की कागजात है। माँ बाहर निकलकर आ गई थी, लेकिन जब पुलिस ने बेटे को घेर लिया
तो वह अंदर वापस चली गई। अपने होनहार बेटे के हाथों में हथकड़ी लगते हुए वो नहीं देख सकती है। लगभग 2 घंटे के भीतर सब कुछ शांत हो गया। बांस के बेड़े से बने किराए के घर में रहने वाली, काम करने वाली औरतें, रिक्शा वाला, ठेला वाला सब कोई पास आ गए और अपने अपने सामान ले गए। श्रीमती दत्त के आदेश पर घरों को तोड़ने का काम शुरू हो गया और खत्म भी हो गया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, महिला को शायद दया आ गई। बेड़ा और टीन आदि इस घर की आंगन में फिकवा दिए और बिना देखे वापस चली गई। बेटा सारी रात हवालात में रहा। माँ सारी रात जागते हुए बिस्तर पर लेटी रही। ऐसी घटना पहली बार नहीं घटी है। बेटे की तलाक की रात भी ऐसे ही थी। सारी रात वो अपने दोस्तों के घर बैठा रहा। सुबह आकर आंगन में नहाया था, कहा था, न्यू जर्नी स्टार्ट होगी अब माँ, नहा धोकर स्वस्थ हो लेता हूँ, बाथरूम में जाओ। ऐसा समझ लो ना कि मैं शमशान से आया हूँ, एक समधी मर गया। ये बात उस दिन भी कही थी, आज फिर से कह रहा है। वो नहा रहा है, उसे वो आवाज बिस्तर पर से ही सुनाई दे रही थी। शरीर पर टॉवेल लपेटकर वो माँ की कमरे के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। पर्दे की इस तरफ से कहने लगा, और कोई झमेला नहीं है माँ, कोर्ट में हाजिर होते ही केस विड्रॉ हो जाएगा, तुम्हारे लिए ही करेगी। अब चिंता मत करती रहना, तुम अच्छी तरह से रहो। मैं ट्यूशन के लिए जा रहा हूँ, कल छूट गई। सैटरडे को छूटने से संडे बहुत तकलीफ होती है। लंच करने आऊँगा तुम्हारे साथ। कुछ समय बाद वो चला गया। अच्छा हो या बुरा, आदमी अनेकों काम करता है, क्या उससे सबक लेता है? जिंदा हो या नहीं, खुद ना समझ पाने वाली माँ यही सोचती रही, केवल उसका बेटा हमेशा राजपुत्र बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं अगले प्रतिभागी श्री राजेश्वर सिंह राजू जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पिछले 35 वर्षों से लेखन कार्य कर रही हैं। आपके लगभग 1000 लेख, 100 कहानियां और 500 कविताएं प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आप डोगरी संस्था, जो कि एक अग्रणी साहित्यिक संगठन है, उसके महासचिव हैं। स्वागत है राजेश्वर सिंह राजू जी का। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु अग्रवाल जी। मैं साहित्य अकादमी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस अवसर के लिए। डोगरी कहानी है, उसका हिंदी शीर्षक है और उसने कान बंद कर लिए। बिस्मिल्लाह चिकन कॉर्नर। मेरी नज़र दुकान पर टंगे बोर्ड पर जैसे ही पड़ी तो मोटरसाइकिल की ब्रेक पर पाँव का दबाव बढ़ता चला गया। मोटरसाइकिल ठीक दुकान के बाहर स्टैंड पर लगाकर दुकान की तरफ बढ़ दिया। दुकान में और दुकान के बाहर पिंजरों में बंद चूजे जैसे अपनी मौत का इंतजार कर रहे हों। दुकान का मालिक अच्छी डील डोल वाला अधेड़ उम्र का था। सिर पर सफेद टोपी पहनकर एक कोने में बैठा पान चबाते हुए एक दो ग्राहकों से बातों में उलझा था। पान चबाते हुए कई बार मुंह ज्यादा खोल देता तो टूटे फूटे काले मसूड़ों और पान सुपारी के साथ कुश्ती सी करते दांत दिख जाते, जो शायद वक्त से पहले ही अपनी उम्र भूख चुके थे या फिर ठीक पिंजरों में बंद चूजों की तरह असमय मौत का इंतजार कर रहे थे। मुझे दुकान के बाहर से टकटकी लगाए देख मालिक ने पान की जुगाली करते हुए पूछा, क्या चाहिए? देसी 500 रुपये किलो और बॉयलर 190 रुपये किलो। मैं मुस्कुराया। असल में मुझे कुछ खरीदना नहीं है, किसी से मिलने आया था। मिलने? किसे मिलने? वह चौंका था।
आपकी दुकान पर एक छोटा लड़का काम करता है, मुन्ना। हाँ, शायद मुन्ना ही नाम है उसका। क्या काम है उससे? आप उसके क्या लगते हो? दुकान के मालिक के मुझे लगातार घूरने से मैं सकपका गया। जी, मैं तो उसका कुछ नहीं लगता, पर फिर क्यों मिलना चाहते हो उससे? अखबार में लिखोगे उसके बारे में? बाल मजदूरी? दुकान का मालिक पान की पीक एक और थूक कर बहस में उलझ गया। इससे पहले कि हालात बिगड़ते, मैंने झटपट पैंतरा बदला। जी जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में मेरा एक दोस्त ने मुझे बताया था उसके बारे में। क्या? क्या बताया था उसने? यही कि जब वह हलाल करता है, फौरन बाद वह अपने कान बंद कर लेता है। तो इसमें हैरानगी की क्या बात है? सवाल यह है कि अगर वह ऐसा करता है, तो फिर चूजे हलाल करता ही क्यों है? ओह, तो तू उसकी आत्मकथा लिखना चाहता है? माली गुस्से में पान को एक तरफ थूक कर जैसे लड़ने पर उतारू हो आया। कुछ ही पलों में आसपास के दुकानदार और राह गुजरते लोग इकट्ठा होने लगे। तो तमाशा बनने की जगह वहां से खिसकना बेहतर जान मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और चलता बना। लेकिन जाते हुए जब दुकान की तरफ नजर घुमाई, तो एक छोटा सा लड़का चूजे के पिंजरों के पीछे से छुपकर पूरी मासूमियत के साथ मुझे देख रहा था। मोटरसाइकिल चलाते हुए बेशक मेरी नजर सड़क पर थी, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर उसी छोटे लड़के की तस्वीर चलचित्र की तरह घूम रही थी। चूजों के पिंजरों की ओट से घूरता वह मासूम बच्चा यकीनन मुन्ना ही था। दफ्तर पहुंचा ही था कि राशि दौड़ती आई। स्टोरी बन गई। मैं बिना कुछ बोले अपने डेस्क पर आ बैठा, कंधे से थैला उतार कर एक तरफ रखा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा था। राशि ने एक तरफ रखी पानी की बोतल का ढक्कन उठा खोलकर बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी। लगता है तुम बहुत थक गए हो। खैर, काम इतना आसान भी नहीं था, लेकिन तुम भी अपनी धुन के पक्के हो, तो कल के अखबार में एक और सनसनीखेज स्टोरी छपेगी। सचमुच यू आर डेयरिंग यार। राशि ने मानो एक ही सांस में सब कुछ कह डाला था। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी बिस्मिल्लाह चिकन कॉर्नर में काम करने वाले उस मासूम बच्चे की सूरत हावी थी। शायद मेरी परेशानी को राशि ने भांप लिया था। पास सरकर बोली, परेशान हो? लगता है स्टोरी नहीं बन पाई। नो प्रॉब्लम। वैसे काम को इतना आसान भी नहीं था। अब की बार तो कसाईयों के साथ पाला पड़ा था। राशि, उस बच्चे से दुकान पर जाकर कुछ भी जान लेना असंभव है, और काम करते बच्चे का फोटो ले पाना तो जानलेवा है। तो क्या करें? स्टोरी करें या रहने दें? वैसे लड़के को बुलाने का एक रास्ता तो है हमारे पास, लेकिन लड़के को बुलाएंगे कैसे? होम डिलीवरी के बहाने? जरूरी तो नहीं कि वही आए। चांस लेने में क्या हर्ज है? राशि की बात सच निकली। पांचवी बार होम डिलीवरी लेकर मुन्ना फ्लैट के सामने खड़ा था। राशि तो खुशी से जैसी चीख ही पड़ी, राज राज, वह आ गया। साथ वाले कमरे से बाहर आया तो दरवाजे पर खड़े मुन्ना को देखकर उस पर तरस आ गया। मुन्ना राशि के खुश होने पर हैरान परेशान था। लिफाफा राशि के हाथों में थमाते हुए बोला, 190 रुपये। कोई बात नहीं, पैसे भी मिल जाएंगे, पहले तो अंदर तो आ। मेरे अंदर बुलाने पर वह हैरान था। मैं उसे समझाते हुए बोला था, अरे आ भी यार, डरने की कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुन्ना परेशान था। मासूमियत उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। बिना सोचे समझे अंदर आकर झिझकता हुआ सोफे पर बैठ गया। मेरी नजर उसकी मैली कुचैली पैंट कमीज पर पड़ी, तो उन पर खून के दाग साफ थे। खून उसके हाथों और पैरों पे भी साफ नजर आ रहा था। वह मुझे अजीब नजरों से घूर रहा था। तभी राशि उसके लिए जूस ले आई। जूस पीते हुए मुन्ना सहज नहीं था। जाने कितने ही सवाल उसके हलक में घुटन पैदा कर रहे थे। गुर्बत इंसान में आत्मविश्वास कहाँ आने देती है। इज्जत मिलने लगे तो गरीब को सच भी ख्वाब नजर आने लगता है। वह सकपका जाता है। कुछ ऐसे ही हालातों से गुजर रहा था मुन्ना भी। उसकी आंखों के भाव गवाही दे रहे थे कि जूस के बदले उसे कुछ तो करना ही था। पर क्या? ये सवाल उसके गंभीर चेहरे पर बराबर रेंग रहा था। उसकी हालत देखकर मुझे अपने आप पर भी तरस आने लगा था। आखिर उसके शक को हकीकत में बदलने के लिए सवाल तो मुझे ही पूछने थे। क्या नाम है तेरा? मुन्ना। गर्दन झुकाए ही जवाब आया था। उम्र?
14 वर्ष। मैंने सुना है चूजे हालात करने के बाद तुम अपने कान बंद कर लेते हो, क्या ये सच है? जी। लेकिन क्यों? उनके तड़पने की आवाजें नहीं सुनना चाहता। ओह, पर हलाल करना तेरी मजबूरी है। क्या कोई और काम नहीं मिला? और कोई काम मिलता ही नहीं। अभी मैं छोटा हूं ना। घर कहाँ है? गांव मैत्रा, जिला रामबन। घर में और कौन कौन है? अम्मा और एक बहन। अब्बा? वह तो काफी पहले ही मर गए थे। और बहन, वह क्या करती है? आशा वर्कर है। काम करना अगर तुम्हारी मजबूरी ना होती तो क्या करते? पढ़ाई करता। तू चिकन खाता है? इस बार राशि ने पूछा था। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, कहते हुए मुन्ना उठ खड़ा हुआ। मालिक नाराज हो जाएगा, काफी देर हो गई। पैसे? मेरे हाथ से 200 रुपये लेकर जब वह 10 रुपये वापस करने लगा तो मैंने उसे रखने के लिए कहा। उसने 10 रुपया पैंट की जेब में ठूंस दिए और फिर इससे पहले कि राशि कैमरे से उसका फोटो ले पाती, मैंने राशि को रोक दिया था। मासूम मुन्ना ने मुझे अजीब नजरों से देखा और फिर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। फ्लैट का दरवाजा बंद कर जैसे ही अंदर आया तो राशि गुस्से में बोली थी, फोटो क्यों नहीं लेने दिया? गोल्डन चांस था। नहीं राशि, हमारे लिए तो सनसनीखेज स्टोरी बन जाती, लेकिन यही स्टोरी उसके लिए मुसीबत बन जाती। भाई बहन बड़ी मुश्किल से मेहनत मजूरी करके घर चला रहे हैं, उनके लिए और भी मुश्किलें पैदा हो जाती। पर चाइल्ड लेबर पर इसका कोई इलाज है क्या? तो तुम ये स्टोरी कवर नहीं कर रहे? नहीं, मुझे तो एहसास होता है कि मानो पिंजरों में बंद चूजों की जगह ये मासूम कैद हो, छूटने के लिए तड़पता, लेकिन कोई मददगार नहीं। चाइल्ड लेबर पर बने कायदे कानून ही हथियार बने इन्हें हलाल कर रहे हों। इंसाफ की देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली हों, कान बंद कर लिए हों, ताकि मुन्ना जैसे हजारों लाखों की चीखें सुनाई ना दें। पर आज हम पत्रकारों का फर्ज बनता है कि इनकी चीखों को अपनी आवाज दें। हम कितने फर्ज कैसे निभाते हैं राशि, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। कल रविवार है, पेपर में कुछ तो रोचक सनसनीखेज देना है ना। इसी से पुलिस जागेगी, समय सेवी सामाजिक संस्थाएं आगे आकर इस मासूम का सहारा बनेंगी। कितनी देर? सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए भी छापा पड़ेगा? मुन्ना को निजात मिलेगी, फिर कोई संस्था मशहूरी के लिए उसे अपनाएगी, फिर संस्था द्वारा ही शोषण। पिछले दिनों बाल कल्याण संस्था के हॉस्टल में छात्राओं के साथ यौन शोषण का खुलासा भी तो हमने ही किया था ना। फिर उसका क्या हुआ? राज, हमें अपने कर्तव्य निभाने पर ध्यान देना चाहिए। ओके, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं अकेले ही ये स्टोरी कवर कर लूंगी। राशि फ्लैट से बाहर आती बोली थी। चल रहे हैं ऑफिस? मैं चुपचाप उसके साथ फ्लैट से बाहर आ गया था। अगले दिन राशि ने खुद ही रिपोर्ट बनाकर छाप दी। लाजवाब रिपोर्टिंग पर लगातार फोन आने लगे थे। राशि बहुत खुश थी, बार बार मुझे देखकर मुस्कुराती और फोन सुनने लगती। मेरे मन में कई किस्म के विचार ज्वार भाटा बने उमड़ पड़े। हम हकीकत बयान करने वाले भी कितने खुदगर्ज होते हैं। जब मैंने और राशि ने शराब पर रिपोर्टिंग की थी, उस रात देर तक, बल्कि सुबह तक खुद उसका जश्न मनाते हुए पीते रहे थे। सिगरेट पीने से होने वाले नुकसानों से जनता जनार्दन को अपने लेखों से आगाह करने में ही न जाने कितने सिगरेट फूंक चुके हैं। भारतीय आदर्शवाद का गुणगान करना फर्ज बन गया है और भारतीय पौराणिक रीति रिवाजों को प्रमुखता से उठाते हुए समाज में तेजी से लिविंग रिलेशनशिप के फैलते जहर को कठोर शब्दों में लताड़ने के बावजूद मैं और राशि बिना शादी किए एक ही फ्लैट में, एक ही कमरे में और एक ही बेड पर पिछले 2 सालों से इकट्ठे रह रहे हैं। आज रविवार था, छुट्टी भी थी। 12 बजने को थे कि किसी ने फ्लैट की घंटी बजाई। ब्रेकफास्ट करते करते राशि उठी, दरवाजा खोला तो सामने मुन्ना था। परेशान, उदास आंखों में आंसू लिए वह सुबक रहा था। आपने अखबार में मेरे ऊपर लिखा, मालिक ने दुकान से निकाल दिया। क्यों लिखा मेरे ऊपर? क्यों खेले आप मेरी रोजी रोटी के साथ? कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं अब? राशि के चेहरे के भाव एकदम से बदले थे और उसने दरवाजा बंद कर दिया। वह घंटी बजाता रहा। राशि फिर से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी। कल तक मुन्ना को बड़े आदर सम्मान अंदर बिठाकर जूस पिलाने वाली राशि और आज की राशि में जमीन आसमान का फर्क था। उसने अपने कान बंद कर लिए। मुझे ऐसे प्रतीत हुआ मानो राशि उस मासूम मुन्ना की जगह हो
और वह मासूम पिंजरों में बंद चूजों की जगह दोनों अपना अपना काम करने को मजबूर और इस कारण उठ रही आत्मगिलानी की चीखों को सुनने से बचने के लिए दोनों ने कान बंद कर लिए थे। घंटी काफी देर तक बजती रहे, फिर कुछ देर बाद घंटी बजना बंद हो गई, जैसे ड्रम में पड़ा चूजा तड़पने के बाद शांत हो जाया करता है। शुक्रिया। धन्यवाद सर। मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी, मिस नंदिनी सेन। आप एक प्रतिष्ठित लेखिका, आलोचक और शिक्षाविद हैं। आप डायस्पोरा, एंग्लोफोन अफ्रीका और तुलनात्मक साहित्य पर लिखती हैं। आपकी कहानियों का पहला संग्रह द सेकेंड वाइफ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एक बेस्ट सेलर भी रह चुका है। आपने भारत और नाइजीरिया की नारीवादी कहानियों पर इन हर अर्बन मेज नामक एक कहानी संग्रह का भी संपादन किया है। आप सभी के समक्ष मिस नंदिनी सेन। Thank you. Thank you so much, Anshuji, for that lovely introduction. And I'm eternally grateful to Sahitya Academy for this honor that I'm here today amidst all of you. Thank you to my panelists, the chairperson. I will read out a story, the title story from this volume, and it's called The Second Wife. I write in English, and the story is also, so I read in English. The procession wound its way through the narrow lanes of Kolkata as the sounds of Vande Mataram rent the air. A woman quietly stepped onto the terrace. She stood at the railing to take in the sight. From her aristocratic bearing, she looked every bit the mistress of the house. But her actions were guarded, and she took every precaution to not be seen. The sari's anchal was pulled forward, veiling her face from the world. As she stared at the procession, her eyes welled up with unshed tears. Unbeknownst even to her, her anchal slipped back, revealing her incredibly beautiful face. She hastened to cover her face again, then slowly she walked across the terrace, went down the stairs, and slipped out of the house. Kusumbala's daughters were named after flowers, Champa and Bela. Champarani was as fair as the eponymous Champapul, with a face that resembled goddess Durga. Bela was darker than her sister, and her chiseled face shone with a unique glow. Her hair cascaded down to her waist, the firmness of her body and her dark, evocative eyes bestowed a touch of sensuality upon her. Champa was the quieter one. She would sit in a corner playing with her earthen dolls. Bela had no time for such things. Instead, she would roam the village, climbing trees, plucking fruits, and fishing in the pond. She was the undisputed leader of a gang of boys who treated her like one of their own. Together, they raided every fruit laden tree and stealthily fished in the neighborhood ponds. Every single day, someone or the other would turn up at home to complain about Bela and her waywardness. Who on earth will marry a girl like this? The neighborhood women grumbled. After Champa's birth, Kusum lost two precious male children during childbirth. When Bela was born, Kusum was sure she too would follow her brothers in death, so she chose to be indifferent to the infant. But Bela, she was determined to live. She cried lustily till her mother was forced to feed her. When Bela was barely 3 months old, tragedy struck yet again. Her father died of a heart attack. While Kusum was widowed at a very young age, the elders in the family pinned the blame on Bela, calling her inauspicious. First, she had eaten her brothers, and now her father. Unaware of all the evil deeds she had supposedly committed, Bela continued to grow like a bamboo reed watered by the rains. Everything about her was earthy and solid. She was exceptionally good in studies as well, but of what use would that be to her, wondered Kusum. Soon Bela would be pulled out of the Pathshala and married off. Although Kusum never admitted it, she loved Bela deeply. She was certain her younger daughter had been cut out for much bigger things in life. Oh, why did God make her a woman? A woman's life begins and ends in the kitchen, she thought. And at this thought, a tear would roll down her eyes unbidden. Yet, the next morning, she would complain loudly to her gods for having cursed her with the changeling of a child.
Champa's beauty was the talk of Kolkata, and Kusum was flooded with marriage proposals for her elder daughter. The decision wasn't hers to make. Champa's uncles fixed the marriage, and soon the 12-year-old bid a tearful goodbye to all her childhood moorings and became the daughter in law of the Datta household of Kolkata. At one point of time, the Dattas had been a well to do family. Now, what remained was a sprawling, ungainly mansion in desperate need of repairs and a good name in the society, which was deemed even more important than preserving their dwindling fortunes. Clad in a red Banarasi sari and a veil during the ceremony, Champa had barely had a glimpse of her husband. She met him much later at their Pulshoja when the young bride sat on the flower bedecked bed as her husband joined her. He was tall, taller than any man she had ever seen. Champa's heart went cold with unknown fear. Ratan was a strapping youth of 20 who worked as a landowner's scribe. His passion was football. Like Champa, he too was confused about what he was required to do with this new addition in his life. He understood he had to be dominating because his friends had warned him against being kind to women. It's a game of one upmanship. Right at the outset, you must show her who's the boss. They had insisted. At home, Ratan had learnt no better. Without saying anything to the bride, he lay on the bed, stretched out his legs, and asked her to press them. Later that night, he woke up to find her fast asleep, her head on his feet. His slight movement woke her up, and she started pressing his legs yet again. Ratan drifted back to sleep, a contented man. This girl would do his bidding without asking questions. He did not have much experience with women, but her servility pleased him no end. Over the next 5 years, they became parents to two girls. With every birth, an increasingly enraged Ratan heaped curses on Champa for her inability to give him a male heir. After every childbirth, Champa grew thinner and weaker, till finally, at the tender age of 17, she breathed her last. Meanwhile, Bela outgrew her frocks and started to wear saris. On reaching puberty, she was forced to discontinue school. No longer did she have a free run of the neighborhood with the boys. Now she found solace in the books that she read. Kusum knew it was inauspicious for a girl to read, but she was loath to deny her daughter these little pleasures, knowing the tough times would follow once she got married. Both Kusum and Bela had longed to see Champa, but the Datta household being patriarchal to the hilt, Champa had not been allowed to visit her parental home. And then came the shocking news of Champa's death. Kusum and Bela were devastated. Soon word was out that Ratan was looking for another bride. And one day, Ratan came visiting with his daughters. He convinced Kusum that by marrying Bela, he would be doing right by his daughters. She's their aunt, she would love them as their own, and would never behave like the proverbial stepmother. Bela's uncles were overjoyed at the idea. They wouldn't have to spend much on this wedding. Kusum shed bitter tears, but there was little she could do to prevent the marriage. So she steeled herself and watched her little girl being adorned in a red Banarasi sari and whisked off to the Datta household as Ratan's second wife. Before leaving home, Bela had touched her books one last time and sobbed inconsolably. Later, a dry eyed Bela had touched her mother's feet to seek her blessings and said her final goodbye. That was enough to get the in laws' tongues wagging. Which girl left her home without howling? Heaven knew they were taking home a daini. The name struck. In the Datta household, Bela was indeed a daini. She had bewitched Ratan. It was already a year since the marriage, but Ratan's eyes followed her everywhere. Bela had not given Ratan the much desired male child. In fact, she had not conceived at all. Despite the passage of time, she retained her tall, stately self. The only change in her was the bright red vermilion that she wore in the parting of her hair. She took excellent care of her nieces, and even her worst enemy could not find fault with her devotion towards them. Yet Kusum was worried. Bela seemed to have changed. She had completely withdrawn into herself. She performed her duties like an automaton. Only the fire in her eyes would be reminiscent of her erstwhile self, but she took care to keep her gaze down, and her face remained firmly covered with her sari's aanchal. There was no knowing what was on her mind. Years went by. Bela fulfilled her duty of being the perfect mother. The girls were married off into prosperous Kolkata households. Bela still looked the same, only now she had taken to wearing white saris. After all, she had become a mother in law. Ratan tried to protest. You're not even their real mother. Bela smiled. Didi would have done the same. It's either her or me. How does it matter?
Ratan disliked Champa's name being mentioned in the house. She was someone he never cared for. But Bela was different. She had won his heart completely. He tried hard to please her, but the more he tried, the further she seemed to drift away. He even went against his mother's diktat and started buying her books. She devoured them hungrily, but would never ask him to get anything for her. How he longed for her to ask him for something, anything. Even the jewelry he had gifted her, she had passed on to her nieces as their dowry. Her sari was crisp cotton, white in color, with the mandatory red border. Apart from the thin neckpiece and a pair of bangles, she wore no jewelry. Looking at her, one would think she was undergoing some severe penance. She performed her duty towards everyone, but continued to remain aloof and distant, so much so that Ratan started growing wary of her ways. He loved her to distraction. She never thwarted his advances, nor did she crave them. She was indifferent to all his ministrations. Over time, Ratan too had changed. Gone was his arrogance and brusqueness. His appearance had also changed. He was pot bellied, balding, middle aged man, incurably in love with the still very beautiful Bela. The gossip in the neighborhood was that Bela had deliberately not had a child as she wanted to maintain her figure. And it was with her maidenly body and her long, lustrous locks that she continued to bewitch her husband. She has done some magic, they whispered, nodding their heads, though inwardly they envied the attention her husband showered on her, a mere childless woman. It was that time when the country was going through a major political upheaval. The freedom struggle was rapidly gaining ground. The Datta household tried its best to insulate itself from the world outside, but it wasn't easy to hold this tide back. Young men were seen marching the streets of Kolkata, brandishing banners, and cries of Vande Mataram filled the neighborhood. One day, a young boy turned up at the Datta household, seeking arms for struggle. Without a moment's hesitation, Bela took off every piece of ornament she was wearing and handed it over to him. He stared at her in surprise. These must be very expensive, Ma. Are you sure you want to part with them? Yes, keep them. Then, for the first time in years, Bela's voice trembled with the force of her emotions. Aren't there women in your group? Don't women participate in the struggle? They do, Ma. Our leaders want women to lead from the front. They say a one legged person can't win a race. Since that day, Ratan noticed a change in Bela. There was a feverish excitement about her. She devoured the newspapers hungrily, as if willing them to perform some miracle. She waited for him to return from work and then wanted to talk about the freedom struggle. Ratan was bewildered. Unlike Bela, he wasn't touched by the struggle. For him, the struggle was ludicrous and a space for licentiousness. Whoever heard of women from respectable families taking to the streets to protest? Bela's mother in law prophesied that the dreaded Kali Yuga had arrived and that the world would soon come to an end. But Ratan tried very hard to be patient with his beloved second wife. What if she lapsed back into her old withdrawn self? Why could this woman not be like the other women around him? One day, when such a procession wound its way through the narrow lanes below the Datta household, Bela quietly went up to the terrace for a better view. Yes, the boy had been right. There were women right in front, holding banners and singing Vande Mataram. Endless rivulets of tears streamed down Bela's cheeks. Then she slowly walked across the terrace, went down the stairs, and slipped out of the house. In the old houses leaning on each other along the narrow lanes of Kolkata, where Bela once lived, in the Datta household, her story is told even today. She had brought shame upon her people and her community. She was a fallen woman. Who would have thought a happily married woman from a respectable family would abandon the comforts of her husband's home to heed the call of such unbridled freedom from the world outside? But in the confines of a room, the old and frail Kusum shed tears of joy. At last, her Bela was free. Thank you. Thank you so much, ma'am. Next, we have with us C. Ganesh ji. You are the eminent Malayalam writer, has published 25 books so far. Some of his prominent books are Kriyatmak Katha Patrangal, Aizer, Ayane Jeevitam. He has also published a collection of stories in English and a member of the Authors Guild of India. He is currently working as assistant professor in the creative writing department at Malayalam University, Tirur, Kerala. Please welcome, I present before you Mr. C. Ganesh.
Good afternoon, everybody. My story titled JCB Girl has been published in a leading Malayalam magazine, Bhasha Poshini. And this story talks about a tribal girl who wants to drive a JCB. The story has two parts. Part one. She did not say that she wanted to be a JCB driver when Mercy teacher asked in the classroom what she wanted to be when she grows up. Instead, she said that she wanted to be a doctor who treats the poor in her community. It got a big round of applause from the class. Her dedication to service was appreciated not only in the classroom but also in the staff room. To just get a taste of my language, I will read just one paragraph in Malayalam. വലുതായാൽ ആരാവണമെന്ന മേഴ്സി ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ് മുറിയിലെ ചോദ്യത്തിന് JCB ഡ്രൈവർ ആവണമെന്ന ആഗ്രഹം അവൾ പറഞ്ഞില്ല. പകരം തൻ്റെ സമുദായത്തിലെ പാവങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് ക്ലാസ്സിൽ വലിയ കയ്യടി കിട്ടി. അവളുടെ സേവന മനോഭാവം ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമല്ല സ്റ്റാഫ് റൂമിലും പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു. It was a bad day. After saying this, Mercy teacher, she stared at everyone just like being nauseous due to indigestion. Everybody looked at her in wonder. Not even talking with anyone, she climbed down the hill and played for some time, throwing stones into the Bhavani river. She could only see the JCB tires in the ripples blooming in the water. She came back home as the darkness fell. She would have mumbled 1,000 times, I want to drive a JCB, drive a JCB. An old leaf fell on her cheeks from the forest. Small frogs that were hiding in the long alleyway to her home looked at her. She was the stone idol of Malayara Chatan, god of hills. She only had to one thing to say to everyone, I don't want to be a doctor. I just want to drive a JCB. But did she say that to anyone? No, not even to a single soul. She went wrong at thinking that it would end as a high school question. Later, people started talking about her answer everywhere. At the inauguration of the camp of talented students, Headmaster Shanmugan sir said, the children of forest are not what they used to be. They have started dreaming to be doctors and engineers. For example, as he uttered her name, the people gathered there stared at her. Mercy teacher had written that speech for Shanmugan sir. Kandaswamy, a member of Tamil Makkal Kakshi, predicted that there would soon be a doctor from the tribal village at the Gram Sabha meeting. Rangaraju, who used to give household articles for very less prices and collect interest, congratulated her but gave a backhanded compliment and said, you need to pass 10th standard first. Still, I am going to be a doctor. She had somehow clarified to Raju. Raju took the news to all the other villages. Who? Our Teni. Ha, she wants to go to college to become a doctor. Will she able to do that? Medical college in Palakkad is so far, but we don't know if she will be able to do that. Who will look after her granny Kuttipanu then? The youngsters of village also brought up this topic in their discussion. Mercy teacher got transferred even before she was in 10th standard. It is only a rumor that nobody fails the 10th class exams. She did. She failed in the exams. After some days, Kuttipanu's death was sudden and it was hard. She was off to work
As she realized that there was no choice but go for work early in the morning, she gave Kuttipanu a bath, dried her with the towel, and took porridge with her. When she came home at night after work, Kuttipanu was lying lifeless with both his hands raised. To lower the arms, the bone had to be broken. He wasn't taken to the hospital. 1 week before the death of Kuttipanu, called Theni and on to her and asked, "Where are you to be? Where are you to me?" She didn't give much care to it, as it was her habit of asking these crazy questions. She just smiled at her while cleaning the floor. As she kept the broomstick and cleaning clothes in the basket and came back, Kuttipanu asked again, "Who are you to me?" "Granny, do you have a doubt?" she asked mischievously. She actually meant to ask, "Who am I to you?" but got mixed up. Now she was Kuttipanu's granny. Still, Kuttipanu was lying with her eyes wide. After a while, staring at the concrete piece that were about to come off from the roof of the room, Kuttipanu asked, "Patch the roof of our hut with palm leaves. If not, it's sickness for you, the village, and me." "Granny, I will do that. We will patch the roof of your head and palm leaves. Then use millets as well." "Where?" "Here." "Where?" "Here in this hut." "Inside the hut?" "Ha." Engrossed in a distant memory, Kuttipanu sang to the beat. After some days, she saw a JCB there. She came to JCB in the dark. She kissed him with desire. She stood up on the top of the JCB with her hand raised. The hill then became smaller. As if sitting on the elephant, she looked around, then got off and took a walk. To drive a JCB, the key should be inserted. Where is the key? Rangaraju helped her to drive the JCB. As she was running back from Rangaraju's shop, she was it from a distance. He was standing there with the yellow trunk under the same tree. She jumped into the seat of the JCB. Just like the tribal ancestral method of taming a wild elephant by plucking the hair from its forehead, she made the wild elephant jump. A wonder, it started with a growl. She started trembling, sitting on her seat. With a crunching sound, the village was scooped up and turned over. People ran out of the hut screaming. They saw her smiling on top of yellow wild elephant. All of it was scooped up in the next hour. The elder and his people came running. The attempt to stone her failed. She stopped the machine when the last shack sank into the ground. They tied her with a rope and took her away. Should she be handed over to the police, the central force, or the army? Or will it be the trial of the people? She said, "It is now my village. This is my village. My Mopan will, the leader of the village. You must forgive." Part 2. Interview of Theni, 27 age, who is under the trial under the Wildlife Protection Act and under trial for burglary, section number 378, and vandalism by the Leak Out magazine editor. No one will believe that you were driving a JCB for you for the first time. You attacked the village using the JCB with such skill. How do you feel?
Haha. To be honest, it was my first time driving a JCB. But I didn't feel like I was driving it for the first time. In other words, I was driving this JCB for the last few years. Then it was not correct to say I attacked with the JCB. I didn't attack anyone. Instead of concrete cages, our village will rise there. It may take some time, but it will happen. The village hut where you were born was destroyed in a moment. Don't feel bad. Why? I have not destroyed anything. The village is like energy, it cannot be created or destroyed. The village has emerged from the stones and soil formed like this. If we call it a protest born out of the frustration of a girl who wanted to be a doctor in her childhood, she lost and says, and asks, who doctor? What doctor? Thank you for the patience. Thank you so much, sir. Now, I would like to call our chairperson to please conclude this session as your closing remarks. Yeah, sure, sure. They come all the way to read out their story. To say it's from you. It's a call to the. Well, there's a brilliant panel of writers and equally talented audience. I suppose the silence from the audience side is because you're mesmerized by the storytelling. Uh, uh, it's not easy to sort of respond to somebody else's creativity. Um, you just accept it and then you think over that. Well, personally speaking, I'm a passionate reader of short story as a genre, and I think the genre is going into unprecedented, horizons of creativity. Um, I have always been fascinated, particularly listening to you, um, by the ability to create in a small frame, so many clicks, and then bringing to our attention a world of experience, a world of dreams, hopes, and frustrations. Um, these four writers, as you know, these stories that they have narrated to us, they are already published stories. They occur in collections, and Manikantala Bhattacharji's story has already figured in the collection How I Wish. And Kodal is the collection of the Dodri collection by Mr. Rajeshwar. And Nandini Sen, probably very well known to the Delhi audience, and a prolific writer, I must say. And Ganesh has presented to you the experience of a girl who has her dream, and a dream which not everybody can understand. Well, to me, now the National Academy of Letters, Sahitya Academy, has done this great job of bringing together writers from different languages. Something, very unusual and very important is happening. The language that they represent, the language in which these writers have written, have expressed their creativity,
The language also changes as they create. This is a very fantastic, happening when experiences change, the times change, society changes, trends change, the writing also changes, the imagination changes. So, along with that, a new language is required. So, it's also a great contribution and contribution to the language, enriching of the language. It's an updating of the language also that is happening. You find a lot of experimentations in the genre of short story. Of course, in today's reading, probably there is not a very drastic, deviation, but I'm sure it's all in the offing with these writers. I congratulate each one of them for coming to us and expressing to us their very precious creativity. Frankly speaking, I'm not good in Hindi. I'm not good in Dogri, although I can sense the meanings and the tone. See, Academy promotes all the languages, all the modes of expression in all the identified, scheduled, and unscheduled languages of this nation. Actually, India is happening in this creativity. India is happening in the creative writings of these writers. And perhaps in this post truth world, when everything becomes unreliable, data, facts, politics, even religion, faiths, beliefs, everything becomes unreliable. I think the only thing that we can hold on to is the creativity of writers. They don't lie. If they lie, those lies are for us. They lie for us. So I consider this session a very important session, not only of story reading, but also as a session where the presence and future of Indian society and also literary creativity, where is it heading to? It gives us an idea of, it gives an indication of that. And even in the seemingly realistic story, you can identify, you can hear the metaphorical, symbolic voices of certain dreams, certain disappointments with our society. In fact, each one of the story is this ring of the creator's interface with society through certain individuals' experiences, through certain characters. I don't have to go into a criticism or review of the stories, but I congratulate each one of you and wish that each one of you, next year when you come, you will have more stories, greater stories to tell us. Thank you so much and wish you all the best. And thank you to the audience also. Well, thank you to this very beautiful, talented anchor, Anushi. Anshu. Anshu. Thank you so much, ma'am, and thank you so much to all the renowned and prestigious readers with us. और आप सभी श्रोतागणों का, साहित्य प्रेमियों का भी मैं पुनः आभार प्रकट करती हूँ। ये सभा, ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। हम सभी अब लंच के लिए प्रस्थान करेंगे और आफ्टर लंच हम अपने आज के अंतिम और तीसरे सत्र की तरफ बढ़ावा करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।